हेलो फ्रेंड्स मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जीकेजीएस बाय वासुदेव यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आमे पढ़िबा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अछि पॉलिटिकल साइंस रो। आमे आज ताको डिटेल्स क्वेश्चंस एवं आंसर माध्यम रे डिस्कशन करिबा। तेणु वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियो आपण माने भल लागे त निश्चित भाव में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं कमेंट करने भूलिए नहीं। एवं जो मैंने चैनल को प्रथम थर विजिट करुँच चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँद्वारा कि आम समस्त नोटिफिकेशन प्रथम आपण पाखे पहुँची पार। आज क्लास टी आपण मानी निश्चित भाव में हेल्पफुल कर आग को आसुदा विभिन्न स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एवं अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण रहिबो। चलंतु डेरी न करी आज क्लास को स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पय रहिछि, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 12th शेड्यूल कहा ऊपर डिस्क्राइब करा जाय? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी आपण मानकर 12th शेड्यूल रे डिस्क्राइब करा जाय। नेक्स्ट, केउटा गोटे मैंडेटरी प्रोविजन नुहे 12th शेड्यूल रे आउछि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। महिला मानक पय सीट रो रिजर्वेशन यह 12th शेड्यूल रे मैंडेटरी नुहे। नेक्स्ट, 12th शेड्यूल रे क्यों रिलेटेड प्रोविजन कंटेंट रही है? म्युनिसिपल गवर्नेंस। नेक्स्ट, क्यों आर्टिकल 12th शेड्यूल रिलेटेड अटे? आर्टिकल 243W। नेक्स्ट, 12th शेड्यूल क्यों क्यों स्टेट रे अप्लाई होछि? यह केवल जम्मू एंड काश्मीर को छाड़ी की आउ सबु स्टेट रे लागू करा जायछि। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वार्ड्स इन ए म्युनिसिपैलिटी एज पर 12th शेड्यूल? 12th शेड्यूल अनुसार गोटे म्युनिसिपैलिटी रो मिनिमम वार्ड केतेटा रहबा आवश्यक होछि? 3टी। नेक्स्ट, 12th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन municipalities and municipal council. Next, which of the following is a mandatory provision under 12th schedule? 12th schedule under रे केउंटी गोटे mandatory provision अटे? या होची होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस। रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करूथियो ता होची 12th schedule रे डिस्क्राइब करा जाय छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउंटी गोटे 12th शेड्यूल अंडर रे थिबा म्युनिसिपैलिटी रो गोटे फंक्शन नुहे? आछि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एटा गोटे म्युनिसिपैलिटी रो फंक्शन नुहे बा एही मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यह म्युनिसिपैलिटी को असाइन करा जाय नाही। नेक्स्ट, द 12th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल फंड्स। नेक्स्ट, 12th शेड्यूल रो क्यों फीचर रही है? 3 tier सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस। त्रिस्तरीय सिस्टम कहार ना म्युनिसिपल गवर्नेंस रो त्रिस्तरीय सिस्टम जहाँकि 3 tier सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस। नेक्स्ट, मैं 1 by 1 12टा जाक शेड्यूल बा 12th शेड्यूल आमे सेपरेटली आमे सेगुडी को डिस्कशन करिबा। प्रथम रही आमर फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल रे फर्स्ट शेड्यूल होची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट शेड्यूल जहाँकि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऊपर डिस्क्राइब करा जायछि। नेक्स्ट, व्हिच शेड्यूल लीड्स द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? अछि फर्स्ट शेड्यूल विभिन्न स्टेट मानकर एवं यूनियन टेरिटरीज मानकर जो नेम रा लिस्ट रही क्यों शेड्यूल रही है? 12th शेड्यूल। नेक्स्ट पढ़िबा सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल रे आपण मानकर कहा कहा ऊपर डील
करा जायछि या होछि प्रेसिडेंट गवर्नर एवं स्पीकर आपनको देथिबो प्रेसिडेंट गवर्नर एवं स्पीकर यह क्यों स्केड्यूल रही है सेकेंड स्केड्यूल रही नेक्स्ट प्रेसिडेंट मानकर एवं गवर्नर मानकर इनवॉल्वमेंट आ अलाउंसेस रही क्यों स्केड्यूल रही सेकेंड स्केड्यूल यह गोटे मन रखिए इनवॉल्वमेंट आउ अलाउंसेस यह सेकेंड स्केड्यूल रही नेक्स्ट होची थर्ड स्केड्यूल कहा सहित डिस्क्राइब अटे यह होची ओथ एवं अफर्मेशंस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स यह होची थर्ड स्केड्यूल डिस्क्राइब करा जायछि विभिन्न ऑफिसर मानकर ओथ एवं अफर्मेशन ताहा केउ स्केड्यूल रे वर्णन करछि थर्ड स्केड्यूल नेक्स्ट पढ़िबा फोर्थ स्केड्यूल रे कौन डिस्क्राइब करा जायछि या होछि allocation of seats in the council of states विभिन्न स्टेट रे सीट रो allocation करिबा यह फोर्थ स्केड्यूल रे डिस्क्राइब करा जायछि नेक्स्ट which schedule allocates seats in the Rajya Sabha and to the states and union territories याछि फोर्थ स्केड्यूल नेक्स्ट पढ़िबा फिफ्थ स्केड्यूल शेड्यूल एरिया एवं ट्राइब्स मान जो प्रोविजन रिलेटेड रही फिफ्थ स्केड्यूल डिस्क्राइब करा जायछि बा डील करा जायछि फिफ्थ स्केड्यूल का सहित डील करे अछि स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स नेक्स्ट सिक्स्थ स्केड्यूल what does the sixth schedule of the Indian Constitution deal with as provision related autonomous districts and regions विभिन्न डिस्ट्रिक्ट आउट रीजन मानक जो प्रोविजन को ऑटोनोमस रही ताहा क्यों शेड्यूल रे वर्णन कराइछ सिक्स्थ स्केड्यूल नेक्स्ट पढ़िबा सेवेंथ स्केड्यूल what does the seventh schedule of Indian Constitution deal with सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन आपण मानकर डील करूची जो विभिन्न डिफरेंट पावर द यूनियन आउ स्टेट्स मध्य डिस्ट्रीब्यूट करा जायछि पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा जायछि आपण मानकर यूनियन स्टेट्स मध्य ताहा सेवेंथ स्केड्यूल रो अंतर्गत अटे जहा कि यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट एवं स्टेट लिस्ट यह को मध्य आपण कहि परिबे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं कनकरेंट लिस्ट यह को मध्य आपण यूनियन स्टेट कनकरेंट यह मध्य को आपण यूएससी बा यूपीएससी यह माध्यम आपण रिलेट करि परिबे नेक्स्ट एट्थ स्केड्यूल एट स्केड्यूल आपण मानकर कौन डिस्क्राइब करा जायछि विभिन्न रिकॉग्नाइजेशन लैंग्वेजेस बा ऑफिशियल लैंग्वेज ऊपर एट्थ स्केड्यूल रे डिस्क्राइब करा जायछि नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस यह एट्थ स्केड्यूल रे रहिछि नेक्स्ट नाइन्थ स्केड्यूल रे आपण मानकर विभिन्न लॉ एवं रेगुलेशन ऊपर डिस्क्राइब करा जायछि आपण मानकर प्रश्न पड़िबो लॉज एवं रेगुलेशंस यह क्यों स्केड्यूल अंतर्गत अटे यह होछि नाइन्थ स्केड्यूल अंतर्गत नेक्स्ट टेंथ स्केड्यूल रे गोटे लॉ बाहर कले जहा होछि एंटी डिफेक्शन लॉ पचारे आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों स्केड्यूल रो डिस्क्राइब करा जायछि जे टेंथ स्केड्यूल आ गोटे मानकर आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो 12th स्केड्यूल रो जहा होछि provides the disqualification of members
ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ये अछि 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जहाँकि 10th शेड्यूल डिस्क्राइब करा जायछि। नेक्स्ट पढ़िबा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल आपण मानकर फंक्शंस ऑफ पंचायत पावर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत पंचायतर विभिन्न पावर एवं फंक्शन ऊपर डील करूछि। आज केते शेड्यूल रे 11th शेड्यूल। नेक्स्ट व्हिच शेड्यूल लिस्ट द पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायत होछि 11th शेड्यूल। नॉर्मली आपण मानको देइथिबो पंचायत यह क्यों शेड्यूल रे डिस्क्राइब कराछि होछि 11th शेड्यूल। नेक्स्ट 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल रे आपण मानको पई 12th शेड्यूल रे कोन डिस्क्राइब करूछि होछि म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट व्हिच शेड्यूल डील्स विथ द प्रोविजंस रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज होछि 12th शेड्यूल। नेक्स्ट किछि एडिशनल क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिबा। जो व्हिच शेड्यूल लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया होछि फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल रो पर्पस कोन रहछि या होछि डिफाइन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज। नेक्स्ट second schedule. Which schedule contains provisions related to emoluments and allowances of president and governors. Second schedule. प्रेसिडेंट आउ गवर्नर मानकर जो एमोलमेंट आउ अलाउंसेस रही ता सेकंड शेड्यूल डिस्क्राइब करा जायछि। से भला भाबरे सेकंड शेड्यूल पर्पस कोन रही ताछि पावर एंड प्रिविलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल रे आपण मानकर कोन वर्णना करा जायछि ताछि अफर्मेशन ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल रे ओथ एंड अफर्मेशन आपण मानकर रहिछि। नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल रे आपण मानकर allocation of seats बा सीट allocation इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ताकि फोर्थ शेड्यूल डिस्क्राइब करा जायछि। नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल रो पर्पस होछि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा रो कंपोजिशन ऊपर डिस्क्राइब करा जायछि फोर्थ शेड्यूल रे। नेक्स्ट पढिबा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल डिस्क्राइब करूछि बा प्रेस्क्राइब करूछि ता एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया एवं ट्राइब मानक ऊपर फिफ्थ शेड्यूल डिस्क्राइब अछि। नेक्स्ट फिफ्थ शेड्यूल पर्पस कोन। फिफ्थ शेड्यूल पर्पस होछि शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब मानकर प्रोविजन इनको डिफाइन करिबा। नेक्स्ट शेड्यूल एरिया। नेक्स्ट सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल कौन डिफाइन करा जायछि या डिस्ट्रिक्ट आउ रीजन। डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन गुडी को ताहा सिक्स्थ शेड्यूल अंतर्गत करा जायछि बा अंतर्भुक्त करा जायछि। नेक्स्ट सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल यूनियन आउ स्टेट मध्य रे डिफरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाय छै जहाँ कि यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट एवं स्टेट लिस्ट जहाँ कि आपण मानकर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं कनकरेंट लिस्ट यही तीनोटी लिस्ट आपण मानकर सेवेंथ शेड्यूल रे डिस्क्राइब करा जाय छै। नेक्स्ट सेवेंथ शेड्यूल पर्पस कोन रहै छै ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन करिबा ताहा सेवेंथ शेड्यूल डिस्क्राइब करा जाय छै। नेक्स्ट ना 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल आपण मानक पई ऑफिशियल लैंग्वेज गुडी कर अछि। नेक्स्ट 8th शेड्यूल पर्पस कोन ता अछि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया रो ऑफिशियल लैंग्वेज गुडी को डिफाइन करिबा। नेक्स्ट 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल आपण मानकर विभिन्न लॉ एवं रेगुलेशन गुडी को डिफाइन करा जाय छै। नेक्स्ट 9th शेड्यूल रो पर्पस कोन रही अछि लॉ एवं रेगुलेशन गुडी को वैलिडेट करिबा।
नेक्स्ट 10th शेड्यूल 10th शेड्यूल आपण मानकर 10th शेड्यूल आपण मानकर वर्णना करा जायछि कहा ऊपर ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स 10th शेड्यूल आपण मानकर कोन ना एंटी डिफेक्शन लॉ आपण मानकर एंटी डिफेक्शन लॉ आपण मानकर वर्णना करूछि। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 10th शेड्यूल ताउजी डिफाइन प्रोविजंस फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट 11th शेड्यूल आपण मानकर पंचायत रो पावर एवं फंक्शन को डिस्क्राइब करूछि। नेक्स्ट 11th शेड्यूल आपण मानकर पंचायत रो विभिन्न पावर और फंक्शन गुडी को दिया जायछि। नेक्स्ट 12th शेड्यूल आपण मानकर म्युनिसिपैलिटी ऊपर डिस्क्राइब करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फर्स्ट शेड्यूल जे आर्टिकल 1 रे आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जहा कि फर्स्ट शेड्यूल रही ता आर्टिकल 1 रे रही। फर्स्ट शेड्यूल पर्पज रही आपण मानकर टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द सेकंड शेड्यूल आर्टिकल 59 जहा कि आर्टिकल 59 रही आपण मानकर ताहा सेकंड शेड्यूल रिलेटेड अटे। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेकंड शेड्यूल देखि पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू थर्ड शेड्यूल आर्टिकल 75 जहा कि थर्ड शेड्यूल सहित रिलेटेड अटे। नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल कौन ना ओथ एंड अफर्मेशन को रिलेट करे। नेक्स्ट क्यों आर्टिकल शेड्यूल 4 सहित रिलेट करे आर्टिकल 80। फोर्थ शेड्यूल पर्पस कौन है राज्यसभा कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फिफ्थ शेड्यूल रे क्यों आर्टिकल सहित रिलेट करा जायछि आर्टिकल 244। फिफ्थ शेड्यूल पर्पस कौन ताहा शेड्यूल एरिया एवं ट्राइब मानकर प्रोविजन को लेकिन डिफाइन करता है। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिक्स्थ शेड्यूल आपनकर आर्टिकल 244। नेक्स्ट पर्पस कौन रही आर्टिकल 6 शेड्यूल पावर आउ प्रोविजन फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन विभिन्न डिस्ट्रिक्ट आउ रीजन गुड़िकर डिफाइन करता है क्यों आर्टिकल रे सॉरी क्यों शेड्यूल रे होची 6th शेड्यूल रे। नेक्स्ट पढ़िबा 7th शेड्यूल जहा कि रही आपनकर आर्टिकल 246 आपण मानकर 7th शेड्यूल रे रही जहा विभिन्न लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज रे आपण 7th शेड्यूल रे रही। नेक्स्ट 8th शेड्यूल रे आपण मानकर आर्टिकल 344 रही आर्टिकल 344 यह आपण मानकर 8th शेड्यूल रे रही। 8th शेड्यूल पर्पस कौन रही 8th शेड्यूल पर्पस रही विभिन्न ऑफिशियल लैंग्वेज गुड़िक आमर जो भारतर विभिन्न ऑफिशियल लैंग्वेज रही ताहा आपण मानकर 8th शेड्यूल रही। नेक्स्ट 9th शेड्यूल आपण मानकर आर्टिकल 31B। नेक्स्ट 9th शेड्यूल पर्पस कौन रही ना सर्टन लॉ आउ रेगुलेशन को वैलिडेट करवा। नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड 10th शेड्यूल आपण मानकर 102 आर्टिकल को आपण 10th शेड्यूल रही। नेक्स्ट 10th शेड्यूल पर्पस कौन है डिफाइन द प्रोविजंस फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ रो प्रोविजन को डिफाइन करबा 10th शेड्यूल रही। 11th शेड्यूल आपनकर आर्टिकल
243G रे रही आपंकर 243G आर्टिकल आपंकर 11th शेड्यूल रही पंचायत विभिन्न फंक्शन जहाँ रही 11th शेड्यूल आपंकर रही 12th शेड्यूल आपंकर आर्टिकल 243W आपंकर सेम रही सॉरी ये आर्टिकल 243G एवं 12th शेड्यूल आर्टिकल 243W एवं 11th शेड्यूल आर्टिकल 243G नेक्स्ट 12th शेड्यूल आपंकर विभिन्न प्रोविजन आउ म्युनिसिपालिटी ऊपर डिस्क्राइब करा जायछि नेक्स्ट फर्स्ट शेड्यूल रे आपण केतरा स्टेट रही आपण 29 which union territory is not included first schedule is none next what is the total number of constitution officers mentioned the second schedule as fourth president governor speaker एवं CAG जहाँकि कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल यह आपणकर यही चारोटी आपणकर टोटल सेकंड शेड्यूल रही जहाँकि which article of constitution related to the emoluments and allowances of the president of governors article 49 रे आपणकर विभिन्न प्रेसिडेंट आउ गवर्नर मानकर इमोलुमेंट्स एंड एलोवेशंस गुडी को डिस्क्राइब करा जायछि नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ oaths and affirmation mentioned in the third schedule same rate 6 president governor speaker judges member parliament and ministers इकुडी एई सब गुडी करा शपथ ग्रहण एवं affirmation गुडी को एही छोडी होइछि नेक्स्ट What is the total number of seats in the Rajya Sabha allocated to the states and union territories in the fourth schedule? 233. Next, which article of constitution related to the composition of Rajya Sabha? Article 80. Next, what is the total number of scheduled tribe mentioned in the fifth schedule? Fifth schedule रे आपण मानकर शेड्यूल ट्राइब मानकर संख्या केते अछि 7744 744 टी आपणकर शेड्यूल ट्राइब रही जहाँकि फिफ्थ शेड्यूल डिस्क्राइब करा जायछि नेक्स्ट which article of constitution related to the administration of scheduled areas and tribes article 244 next what is the total number of autonomous district and region mentioned in the sixth schedule 10 next which article of constitution related to the administration of autonomous and district and religious article 244 next what is the total number of entries union state and concurrent list of the 97 66 and 47 जहाँकि यूनियन पाई रही 97 स्टेट पाई रही 66 एवं कनकरेंट जहाँ रही आपनको 47 टी लिस्ट नेक्स्ट which article of the constitution related to the distribution of legislative power article 246 next what is the total number of official languages recognized the 8th schedule as 22 total केतेटा ऑफिशियल लैंग्वेज आपण मानो 22 टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर 22 टोटल केतेटा आपण मानो ऑफिशियल लैंग्वेज है होजी 22 नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है होजी 344 आर्टिकल 354 जहाँकि ऑफिशियल लैंग्वेज रही ऑफिशियल लैंग्वेज 344 आर्टिकल 344 जहाँकि ऑफिशियल लैंग्वेज रही नेक्स्ट total number of law and regulation by the ninth schedule अनुसार total number of law and regulation केतेटा रही 244 next
which article of the constitution relate to the validation of law and regulation जहाँ कि आपनका article 31B रे रही next what is the total number of provisions related to the anti defection law देखिए 10th schedule रही which is 6 next which article of the constitution related to the provisions of anti defection है article 102 next what is the total number of powers and functions panchayat mentioned in the 11th schedule 11th schedule रे वर्णना करा जायथिबा पंचायत रो टोटल केतोटी पावर और फंक्शन रही है 29 पंचायत रो टोटल 29 पावर एवं फंक्शन रही नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ पंचायत आर्टिकल 243G आर्टिकल 243G होची पंचायत एवं what is the total number of municipal power and function mentioned in the 12th schedule होची 18 जाकि आपनकर म्युनिसिपल पाई रही 18 एवं पंचायत पाई रही 22 एवं ये आर्टिकल 243W एवं पंचायत होची आर्टिकल 243G नेक्स्ट which of the following states is not mentioned in the first schedule none of these next which article of the constitution related to the first schedule क्यों आर्टिकल फर्स्ट schedule सहित related अटे article 1 next question which of the following constitutional official is not mentioned in the second schedule it is chief justice of india which of the following constitutional officers officers is not mentioned in the second schedule as chief justice of india एगुड़ी प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर एंड सीएजी यही चारोटी आपण मानकर सेकेंड शेड्यूल रे डिस्क्राइब करा जायछि एवं थर्ड शेड्यूल रे आपण मानकर 6 जनकर यह डिस्क्राइब करा जायछि नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन related to the emoluments and allowances of president governance article 59 याकि आर्टिकल आपनकर आर्टिकल 59 ताहा allowances and emoluments ताकि आर्टिकल 59 रे रहिछि which of the following oath and affirmation is not mentioned in the third schedule याकि oath of secretary of ministers याकि ऑप्शन डी oath and secretary of for ministers next which article of the indian constitution related to the oath and affirmation for constitutional officers article 75 next which of the following states is the highest number of seats in the rajya sabha according to the फोर्थ शेड्यूल अनुसार क्यों राज्यर सबुठारु हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट रही जहाँकि राज्यसभा में आज उत्तर प्रदेश सबुठारु हाईएस्ट नंबर सीट रही जहाँकि राज्यसभा में नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा कंपोजिशन ताहा क्यों आर्टिकल अंतर्गत होछि आर्टिकल 80 जहाँकि ऑप्शन 1 next which of the following tribes is not mentioned in fifth schedule अंतर्गत जहाँकि schedule area एवं ट्राइब मानक ऊपर वर्णना करायछि जहाँकि फिफ्थ schedule रे ताहा सेहितरे क्यों तो गोटे ट्राइब नुहे हो सिख next which article of the constitutional related to administration schedule areas and tribes article 244 सठिक आंसर है आर्टिकल 244 जहाँ की schedule area and tribe मानक ऊपर वर्णना करा जायछि next
Which of the following autonomous districts is not mentioned in the 6th schedule? Haji Nicobar and Nicobar जहाँकि 6th schedule describe करा जाए नहीं. Next, which article of Constitution related to the administration of autonomous and district and religious? Article 244. Next, which of the following entries is not included in the union list in the 7th schedule? 7th schedule रे union list जाकि union list रे निम्नलिखित मध्यरु केउंटे नाही दा होची एजुकेशन. Next, which article of Constitution related to the distribution of legislative power? Article 246. Next, which of the following languages is not recognized as an official language in the 8th schedule? Chinese. Next, which article of the Constitution related to the official languages of India? Article 344. Can article the official language of India or no? Article 344. Thank you everyone for watching this video. देखा आ गोटे नुआ वीडियो भिडियोटी देखि आपण बहुत बहुत धन्यवाद. देखा गोटे नुआ वीडियो. जय हिंद.